ધંધુકામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ લેવા માટે વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી। લોકો ઘણા કલાકોથી લાઇનમાં ઊભા રહેતા જોવા મળ્યા હતા। પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત વર્તવાની છે તેવી વાતથી લોકોમાં ફફડાટનો માહોલ સર્જાયો હતો। અમુક અફવાઓમાં પેટ્રોલ ડીઝલની અછતની ચર્ચા થઈ રહી હતી, પરંતુ પંપ સંચાલકોએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ધંધુકાના પેટ્રોલ પંપો હાલ પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે। ત્યાં હાજર લોકોને 2-3 કલાક સુધી કતારમાં ઊભા રહેવું પડ્યું હતું। समस्या शू तकलीफ कोई समस्या नहीं। मारे तो डीजल खूब इंडस्ट्री चालू है, पर डीजल खूब एटला माटे मारे आवવું પડ્યું। તો આ અત્યારે મળી રહે છે, જોઈએ એટલું કોઈ તકલીફ નથી। कोई तकलीफ धंधुका शहरना दृश्यो है। धंधुकानो आईओसीनो आ पंप है, ज्यां लोकोमां अफरातफरी मची है। पेट्रोल और डीजलनी तंगी वर्तावाना एंधाणना लई लोकोमां एक पेनिक है। पेट्रोल पंप मालिको जणावी रह्या छे के अमारी पासे हाल पूरतो स्टॉक है, पर लोकोमां जे एक अफरातफरी मची है। लोको जे प्रमाणे समाचारोमां जोई रह्या छे ते मुजब पेट्रोल और डीजलनी तंगी वर्तावानी है तेवा समाचारोने लई हाल धंधुका खाते लोको फ्यूअल पुरावा माटे पड़ापड़ी करी रह्या होय तेवा दृश्यो हाल देखाई रह्या छे। त्यारे समग्र धंधुका पंथकमां पेट्रोल पंपो पर लांबी लांबी कतारो जोवा मळी रही है। केरबाओ लईने पण लोको पेट्रोल भरावा फ्यूअल लेवा माटे पड़ापड़ी करता होय तेवा दृश्यो नजरे पड़ी रह्या छे। हरिओम सोलंकी, प्रदेश 24 गुजराती, धंधुका।